Hello everyone, very good evening to all of you. I hope everyone is fit and fine. This video I'm discussing 2016 का comprehension. Let's start. First है by killing transparency and competition. अगर इसको हम करते हैं तो chronic capitalism is harmful है to free enterprise, ठीक है. Opportunity and economic growth के लिए भी. Then chronic capitalism क्या है? जहाँ पे rich and influential alleged to have received land and natural resources मिल सकते हैं and various license मिल सकते हैं. करते हैं and natural resources various license in return for pay off to venal politicians is now a major issue had to be tackled. One of the greatest danger क्या है to growth of developing economies like India, middle income trap है where crony capitalism creates oligarchy जहाँ पे कुछ लोग ही रूल करते हैं that slow down the growth. Okay, most logical corollary आपको मैंने बता दिया था, उसके कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट के हिसाब से भी. So launching more welfare scheme, allocating more finance for the current scheme are urgently needed. Urgently की बात की देखते हैं. Efforts should made push up economic growth है by other means and provide license to the poor. देखते हैं. Create transparency ठीक है in functioning of the government and promote करना financial inclusion needed at present. Yes, ये थोड़ा सा साउंड कर रहा है बट सारे के सारे एक बार आपको चेक करना. We should concentrate more on developing manufacturing. तो concentrate then urgently needed. ये तो चलो बट पुअर लाइसेंस ऐसा कुछ हमने डिस्कस नहीं किया था. ऑप्शन सी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. यू कैन climate adaptation may be rendered ineffective if policies are not designed in the context of other development concern. के लिए अगर आपने पॉलिसी डिजाइन नहीं की है तो ये आपकी ineffective हो सकती है काइंड ऑफ. एंड फॉर इंस्टेंस ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी दैट सीक्स टू इंप्रूव फूड सिक्योरिटी आपको इंप्रूव करना है इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में इंक्लूड व्हाट सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड मेजर लेने हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड water and pest management, agriculture information series. Some of these measures may have to do with climate change and other with economic development करने. तो ये सारे आपको लेके चलने. तो most corollary logical placement inference ठीक है. It is difficult to pursue climatic adaptation in developing countries. ये हम कहाँ से बोल सकते हैं. Improving food security is a far more complex issue than climate adaptation here. ठीक है. Every development activity is directly or indirectly linked with the climate adaptation. ठीक है. ये हो सकता है बट अगेन climate adaptation should be examined in tandem with the other economic development options. So जो आपकी बिल्कुल सिंपल सी आएगी याद रखना है वो आपके ज्यादा चांसेस है 50% ज्यादा चांसेस है कि वही आपका आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट पैसेज 142 अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. जबकि पानी की साइकिल है उसमें इनेबल करता है बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए. इससे हम और अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम समझ लें तो. ठीक है. द टर्म बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम जिसके अंदर वो रह रहे हैं. वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी आर इंडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे से आजाद. इन द रियलिटी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिसाइड करती है हाउ बायोडाइवर्सिटी फंक्शन कैसे करेगी. इंटेंस वेजिटेशन एंड सोइल ड्राइव द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डाइवर्सिटी इंडिपेंडेंट है. रियलिटी हाइड्रोलॉजिकल साइड डिसाइड करती है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे फंक्शन करेगी. सभी को पीने के लिए पानी मिलेगा तभी तो वो जिंदा रहेंगे. इंटेंस वेजिटेशन क्या करती है एंड सोइल ड्राइव द मूवमेंट ऑफ वाटर. ये जो सोइल है वाटर को मूवमेंट करने के लिए जगह देती है हम समझ सकते हैं. एवरी ग्लास ऑफ वाटर वी ड्रिंक हैज इट्स at least in part pass through fish, trees, bacteria, soil and other microorganisms से pass होके आते हैं. Passing through these ecosystem, it is cleansed and made fit for consumption. The supply of water is critical serve है that the environmental provide. तो water पे हमने फोकस किया है. Most critical बताना can be made. Biodiversity sustain the ability of nature to recycle water. Yes, recycles. Sorry. Sounds बोल सकते हैं अच्छा कर रहा है. नेक्स्ट देखते हैं. वी कैन नॉट गेट पोटेबल वाटर विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी कैन नॉट गेट आई डोंट नो. प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ. ओके. लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट हाइड्रोलॉजिकल. तो हमने उनकी कैसे आए थे उसके बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया. अगेन ऑप्शन ए.
सस्टेन रिसाइकल वाटर करने के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 साल में बैंकिंग सेक्टर हैज बीन रिस्ट्रक्चर हुआ है विद हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक चीजें ज्यादा ही हैं। प्रोडक्ट आए हैं दैट मेनली सर्व्स मिडिल क्लास एंड अपर क्लास सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। टुडे देयर इज ए नीड है फॉर न्यू एजेंडा ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दैट डज नॉट इंक्लूड, सॉरी, दैट डज नॉट एक्सक्लूड द कॉमन मैन, ताकि अरे कॉमन आदमी तक वो चीज पहुंचे। एसेंशियल इंप्लाइड इसके अंदर कौन सी है? नीड फॉर मोर ऑटोमेशन एंड मोर प्रोडक्ट, ऑटोमेशन तो ऑलरेडी था। नीड फॉर रेडिकल स्ट्रक्चरिंग, रेडिकल। नीड फॉर इंटीग्रेटेड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, क्या इनको इंटीग्रेट करना है। नीड टू प्रमोट फाइनेंशियल, यस, प्रमोट करेंगे तभी कॉमन मैन आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पैसेज, सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन इन स्लम्स एज इमेजरेबल बेनिफिट है टू होम, वुमेन्स एंड गर्ल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, देयर सेफ्टी, देयर प्राइवेसी एंड डिग्निटी के लिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल सैनिटेशन की हमने बात की है। However, women do not feature in most of the scheme and policy, जो policy है urban sanitation में। The fact that even now the manual scavenging exists आज के टाइम में only goes to show that enough has been done to promote core flush toilets and discontinue the use of dry latrine. A more sustained and rigorous campaign need to be launched toward the right to sanitation on very large scale. ठीक है, launch toward very large scale, याद रखना, यहाँ पे मेंशन है। दिस शुड प्राइमरली फोकस ऑन अबोलिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो इसको हमें अबोलिश करना है। With the reference of passage, consider the following statement. Urban sanitation problem can be fully solved by abolition of manual scavenging. क्या fully solve हो सकती है? We don't know. थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क डालिए। There is a need to promote greater awareness on safe sanitation practice in urban areas. Yes, we can say. Option B is right answer, क्योंकि fully solve हम नहीं कर सकते यहाँ पे। To understand the nature and quantity of government proper for man, it is necessary है to attend his character. As nature created him for social life, she fitted him for the station she intended. In all cases, she made his natural wants greater than his individual power. No man is capable, without the aid of society, of supplying his own wants, and those wants acting upon very individual, impel the whole of society. ठीक है, most logical and rational inference बनाना है यहाँ से। Nature has created a great diversity. Diversity का हमें नहीं पता। Any given human being is always short of its want. Yes, it sounds something. Let us see. Then social life is specific characteristics है. Diverse natural wants force man toward the social system. तो यहाँ पे आंसर जो दिया है डी, बिकॉज यहाँ पे वेरियस नीड्स हैं एंड डिमांड ऑफ मैन कंपेल्ड हिम द क्रिएटिंग ए सोसाइटी एज दे नीड कुड नॉट हैव बीन अचीव्ड इंडिविजुअली, आप नहीं कर सकते, तो आपको सोशल सिस्टम क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द लीगल इम्परेटिव्स इन एनी गिवन स्टेट कोरस्पॉन्ड है इफेक्टिव डिमांड की दैट स्टेट एनकाउंटर्स एंड दैज इन देयर टर्न्स डिपेंड करती है जनरल वे अपॉन द मैनर विद द इकोनॉमिक पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी विद द स्टेट कंट्रोल। ओके, स्टेटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इंटररिलेशनशिप है, एंथेसिस है, प्रिडोमिनेंस इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स है, फिर प्रिडोमिनेंस है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का यहाँ पे इंटररिलेशनशिप बता रखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पैसेज, अबाउट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कहां से आ रही है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से। तो ये फैक्ट याद है, मतलब वैसे नहीं, पैसेज में अगर आगे आंसर करना है तो। दिस इंक्लूड नाइट्रस ऑक्साइड है कहां से? फर्टिलाइजर से। मीथेन कहां है? लाइव स्टॉक से। राइस प्रोडक्शन से है मीथेन। मैनुअल मैन्योर स्टोरेज से है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग बायोमास से है। बट दिस एक्सक्लूड CO2 एमिशन फ्रॉम सोइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ओके, थ्याना बर्निंग एंड डिफोरेस्टेशन, forestry and use land use change amount for another 17% ग्रीन हाउस के एमिशन, ये आपको वो कर रहे हैं each year, 3/4 of which come from the tropical deforestation. The remainder is largely from draining and burning tropical peatlands। यार है तो peatland की हम डिस्कस करेंगे, आपको जल्दी है। About the same amount of carbon is stored है world's peatland as the stored in the Amazon rainforest. The most logical and rational inference, sorry, ये बताना है ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड इमीडिएटली रिप्लेस काट दो भाई। इट इम्परेटिव फॉर अस टू मॉडिफाई आवर लैंड यूज प्रैक्टिस
ठीक है, वी कैन मॉडिफाइड इट इज, देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ द ग्रीन, कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं, हाउ वी कैन से ट्रॉपिकल एरिया द चीफ साइट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, यस। एंड यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है इट इज बी, इम्परेटिव टू मॉडिफाई द लैंड यूज, चलो ठीक है। ट्रॉपिकल चीफ मतलब ऐसे है, लेकिन उससे ज्यादा तो ये लैंड पे 17%। 147 पैसेज डिनोट्स फॉरेस्ट एंड लैंड यूज आर can account for under 17% of greenhouse gas. Each year, the quarter of these come from the tropical deforestation. Okay. Next is, as we look 2050, 2050 की तरफ हम देखते हैं, we will need to feed 2 billion more people. इतने लोगों को हमें और खाना देना है. The question of which diet is best, कौन सी diet best है, taken on the new urgency. The food we choose to eat in coming decade will have dramatic ramification for the planet. Simply, but a diet that revolves around meat and dairy, a way of eating that is on the rise throughout the developing world. ठीक है भाई, जा रहा है. Will take a greater toll on the world resources. That is one that revolves around the unrefined grains, nuts, fruits and vegetables. तो critical message यहाँ पे क्या देना चाह रहा है? Our increasing demand for food sourced from animal put a greater burden on our natural resources. देखते हैं. Diet based on grain, nuts are best suited for health. हेल्थ का हम देखते हैं. ह्यूमन बीइंग चेंज देयर फूड हैबिट फ्रॉम टाइम टू टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ कंसर्न, के चेंज करना चाहिए. फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव वी स्टिल डू नॉट नो which type of diet is best for us. And answer taking by UPSC, that is a critical message that convey from the passage. Diet involving meat and dairy is on the rise, अच्छा बढ़ रही है throughout the developing world. Will take a greater toll the world's resources. ठीक है. ऑप्शन ए ही इन्होंने ले रखा है, ग्रेटर बर्डन. These are the exceptions when UPSC generally take this. Next passage, all human digest mother milk as infant, but until cattle began being domesticated 10,000 years ago, children's once been no longer needed to digest milk. As a result, they stopped making the enzyme lactase enzyme नहीं बना, which break down the sugar, lactose को तोड़ता है simple sugar के अंदर. After human began herding cattle, it became tremendously advantageous हो गया मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए. Lactose tolerance involves independently among the cattle herder in Europe, Middle East and Africa के अंदर. Groups not depend on cattle such as Chinese, Thai remain lactose intolerant. Most कौन सा about 10,000 year ago domestication of animal took place in some part of the world. तो क्या इससे हम यही बता रहे. Permanent change in the food habit of a community can bring a genetic permanent, देखते हैं. Lactose tolerant people only are capable of genetic simple sugar into their bodies. People who do not have not lactose tolerant cannot digest any dairy product. The answer is permanent change in the food habit of a community can bring about a genetic change. या तो यूरोप की उनकी बताई. Next is conceptual difficulty in national income. Comparison हम करते हैं between underdeveloped and industrial countries. Particularly serious है because a part of national output in various underdeveloped countries is produced without passing through the commercial channel. तो देखते हैं author क्या imply करना चाह रहा है. Entire national output produced and consumed in industrial countries passes through commercial channel से आ रहे हैं. कितने आ रहे हैं? It is part of national output. ठीक है, हम इसको completely कैसे बता सकते हैं. Next is existence of non-commercial sector in different underdeveloped countries render the national income comparison over other countries difficult. No part of national output should be produced and consumed without passing through the. कोई भी part ऐसा produce नहीं हो रहा. A part of the national output being produced and consumed without passing through the commercial channel is a sign of underdevelopment. इससे underdevelopment है. तो इन सब में best दिया गया है option B. Next passage, an increase in human made carbon dioxide जब बढ़ रहा है in atmosphere would initiate क्या कर सकता है? A chain reaction between what? Plant and microorganism. That would unsettle कर सकते हैं क्या? One of the largest carbon reservoir को जो कि planet में है.
in the soil. In a study, it was found that the soil which contains twice the amount of carbon present in all plants and earth atmosphere combined and become increasingly volatile हो रहा है as people add more carbon dioxide to the atmosphere. This is largely because of increased plant growth. Although a greenhouse gas and pollutant, carbon dioxide also supports plant growth. As tree and other vegetation flourish करते हैं in carbon dioxide rich future, their root remain sorry could stimulate microbial activity in the soil, जो एक्सीलरेट कर सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल कार्बन को एंड रिलीज कर सकते हैं उनको एटमोस्फियर में एज ए कार्बन डाइऑक्साइड. तो मोस्ट लॉजिकल कौन सी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें नहीं पता. ह्यूमन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमोस्फियर. Microorganisms and soil are mainly responsible for increased plant growth. Increasing green cover could trigger the release of इससे हो सकता है 151 का राइट आंसर लिया है. Due to greenhouse effect and soil pollution, a chain reaction has led to excessive carbon deposition हो रहा है and contamination. Afforestation led to the carbon breakdown and release of the trapped carbon back to the atmosphere. ठीक है, stimulation में तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट मैसेज. हिस्टोरिकली बिगेस्ट चैलेंज क्या है टू वर्ल्ड एग्रीकल्चर हैज बीन अचीव. बैलेंस होना चाहिए बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फूड. ठीक है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज द डिमांड सप्लाई बैलेंस कैन बी क्रिटिकल इश्यू है फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी. ठीक है, जो ज्यादा ट्रेड नहीं करती दूसरी कंट्रीज के साथ, स्पेशली इफ इट इज ए पॉपुलस इकोनॉमी. ठीक है, एंड डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इज नॉट ग्रोइंग sufficiently enough to ensure food supplies for an enduring basis, and it is not so much. ठीक है, it is not so much and not always of a constraint of for an open and growing economy के लिए which has adequate exchange surplus to buy food abroad. For the world as a whole, supply demand balance is always an inescapable disquiet and forwarding of hunger and starvation. However, global availability of adequate supply does not necessarily mean, इसका ये मतलब नहीं है कि food which automatically move from countries to surplus deficit is the later back in the purchasing power, जो purchasing power में lack करती है. The uneven distribution of hunger, starvation, under malnutrition, ये सब जो है at the world level that it owes itself the presence of empty pock, hungry mouth, overwhelmingly confined to underdeveloped economies. In as much a two-square meal of elemental significance to basic human existence, the issue of worldwide supply of food has been gaining significance in recent time, both because the quantum and composition of demand has been undergoing big changes, and because in recent year capabilities individual countries to generate uninterrupted chain of food supplies have come under strains for food production, marketing and prices, especially price affordability by the poor in the developing world has become global issue है इनके बारे में सोचने के लिए. ग्लोबल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू पैसिफिक ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल सॉल्यूशन कौन सी है फूड सिक्योरिटी की. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसका तो यार हमने कहीं जिक्र ही नहीं कर रखा. अगर हम इसको कट भी करते हैं तो ऑप्शन आपका सीधा ये बचता है. 2 और 3. इंप्रूविंग प्राइस स्टेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी करने का. मार्केटिंग की प्रोवाइडिंग फूड फॉर वन एंड ऑल. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 152. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बिगेस्ट चैलेंज टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर क्या है. फाइंड सफिशिएंट लैंड to eradicate hunger in underdeveloped countries, to achieve a balance between production of food and non-food item, achieve balance between demand for supply and food. So option D is sound right. Option D. According to the above passages of following help in reducing hunger and starvation को कैसे दूर कर सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी से. बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई, यस. इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ फूड, इंपोर्ट को हम एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे ले सकते हैं. अगर हम इसको कट करते तो 1 तो ठीक है. थर्ड, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर, दैट इज सी. चेंजिंग द फूड कंज्यूमिंग पैटर्न, ये तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे लिया गया ऑप्शन सी
154 का सी। क्वेश्चन नंबर 155, द इश्यू ऑफ वर्ल्ड वाइड सप्लाई ऑफ फूड हैज गेन इंपॉर्टेंस मेनली किसकी वजह से? ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, शार्प डिक्लाइन इन द एरिया, एरिया के एकदम से गिरा है। अगर दो को कट भी करें तो हमारा आंसर बी निकल के आता है। एंड दिस इज द राइट आंसर की लिमिटेशन कैपेबिलिटी ऑफ सस्टेन फूड एंड सप्लाई। तो रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा रेमिटेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी और लैक ऑफ इट। अगर आपकी इसमें कमी है इन गवर्नेंस जनरली एंड सिविल सर्विसेज में इन पर्टिकुलरली, गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी एंड सिविल सर्विसेज में बोथ, इट इज मेजर फैक्टर है फॉर अंडरलाइनिंग द डेफिशिएंसीज इन द गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। डिजाइनिंग एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी हैज बीन ए की एलिमेंट है ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा का। ठीक है, फंडामेंटल इश्यू इज वेदर सिविल सर्विसेज का हो शुड बी अकाउंटेबल होना चाहिए टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए ऑफ द डे और टू सोसाइटी एट ए लार्ज। इन अदर वर्ड्स, हाउ शुड इंटरनल एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो है भी रिकॉन्साइल्ड कैसे हो सकती है? इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इज सो टू बी अचीव्ड बाय इंटरनल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑफिशियल सुपरविजन से, बाय बॉडीज लाइक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कैग, जुडिशियल रिव्यू, एग्जीक्यूटिव डिसीजनिंग, इसे हम बोल सकते हैं। आर्टिकल 311 एंड 312 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है सिविल सर्विसेज में, स्पेशली ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी, had envisaged that a provision of these safeguard would result in civil services is not totally sovereign नहीं होगा political executive के लिए, but will have the strength to function in large public interest में वो काम कर सकेंगे। The need to balance internal and external accountability is thus built into constitution में था। And issue is where to draw the line. Over the year, emphasis seem to have been tilted in favor of greater internal accountability की हम बात कर रहे हैं civil services में, to the political leaders के लिए of the day who in turn are expected and externally accountable है society के लिए at a large election process के through. The system for seeking accountability to society has not worked out and has led to several adverse consequences for governance. Some special measure can be considered for improving accountability in civil services. 311 and 312 should be review होना चाहिए उनका, laws and regulation frame होनी चाहिए to ensure external accountability of civil services के लिए। Proposed civil services bill seeks to address some of those requirement की हम बात करते हैं। The respective role of professional civil services and political executives should defined होने चाहिए so that professional managerial function and management of civil services are depoliticized हम कर सके। For this purpose, effective statutory civil services board should be created at the center and the state. Decentralization होना चाहिए, devolution होना चाहिए authority का, to bring government and decision making closer to the people, also enhance the accountability. पढ़ने में बहुत अच्छा था पैसेज। According to the passage, the following factor led to adverse consequence किस पे है? गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। Inability of civil services to strike a balance between lack of insufficient professional training to the officer of, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते यार। 156 में। And the next is lack of proper service benefit in civil services, lack of constitutional provision to define the respective role, ये हम बोल सकते हैं। Inability of civil services and इसको यहाँ पे राइट आंसर लिया गया है C 1 and 4। With reference to the passage, following assumption have been made, कौन कौन सी बन सकती है? Political executive क्या है? Obstacle है to accountability of civil services to the society. Yes, it can be. In the present framework of Indian polity, the political executive is no longer accountable to society. कैसा है? No, only A. Which of the following is essential message जो imply इस passage के अंदर? Civil services is not accountable to the society that they are serving. Okay. Educated and entitled person are not taking a political leadership की हम कहाँ बात कर रहे हैं? The framer of the constitution did not emphasize the problem being encountered. ऐसा हो सकता है। There is a need है and scope for reform improve, ये हम बोल सकते हैं। तो best among all, option number D. According to the passage, which of the following is not a means, कौन सा नहीं है of financing internal accountability? Better job security, it is a part. Supervision wise service lines, judicial review, seeking accountability through the participation in the
decision making process. D. Some analysis can be proven incorrect. Next is, in general, religious traditions stress our duty to God or some universal ethical principle. Our duties to one another derive from this. A religious concept of right is primarily derived from our relationship to this divinity or principle and the implication it has on our other relationship. This correspondence between rights and duties is critical है and further understanding of justice के लिए. But for justice to be practiced, with your rights, duties cannot remain formal abstraction हो सकती. They must be ground होना चाहिए in community, common unity के लिए. Based together by a sense of common union or common union इसको हम बोल सकते हैं. Even a person virtue, the solidarity is essential है to the practice and the understanding of the justice के लिए. So which of the following assumptions have been made? कौन-कौन से बना सकते हैं? Many reasons derive from the religious tradition. Duty bound only if the believe in God. ये हम कैसे बोल सकते हैं? And religious tradition essential practice है to understand justice. How we can say exactly? Only A. ठीक है, ये दोनों हम काट सकते हैं. Which of the following passage is the crux कौन सा है? Our duties to one another derive from our religious traditions. Having relationship to divine principle is a great virtue. Balance between rights and duties is crucial delivery of this justice. Religious concept is just a primarily derived from our relationship to God. The right answer is balancing की हम बात करें right hand duties की. Second last passage. Biomass is a fuel. As a fuel for power, heat and transport के लिए highest mitigation potential है of all renewable resources. It comes from agriculture and forest residue से आ सकता है as well as energy crop से भी. Biggest challenge क्या है? Is using biomass residue is a long-term reliable supply delivered to the power plant at reasonable cost. The key problem are logistical constraint and the cost of fuel collection. Energy crops, if not managed properly, compete with the food growth. Food production के साथ compete कर सकती हैं and may have undesirable impact हो सकता है food prices में. Biomass production is also sensitive to physical impact of a changing climate. Projection of future role of biomass are probably overestimate given the limit to the sustainable biomass supply unless breakthrough technology sustainably increase productivity. Climate energy model project that biomass as could increase nearly fourfold of around 150 to 200 exajoules. की जो बता रखी almost a quarter would primarily energy in 250 वर्ल्ड की जो प्राइमरी एनर्जी स्केल इसका 1/4 maximum sustainable technical potential of biomass resources for both residue and energy without disruption of food and food forest resources 80 to 170 exajoule हो सकते हैं in a year by 2050 and the only part of this realistically and economically feasible. In addition, some climate models rely on biomass-based carbon capture based storage-based unproven technology to achieve negative emission and to buy some time during the first half of the century. And some of the liquid biofuels such as corn-based मेज वगैरह से निकालते हुए एथेनॉल मेनली ट्रांसपोर्ट में एग्रीगेट रेदर देन एम्बेरल्यूट कार्बन एमिशन ऑन ए लाइफ साइकिल बेसिस. सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो कि आप सेल्यूलोजिक फीडस्टॉक से बनाते हो स्टोरो इन सब से होल्ड प्रीमाइज ऑन सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन हाई यील्डिंग एमिट लो ग्रीन हाउस कार्बन. बट इसके लिए में R&D स्टेज की आवश्यकता है. फिर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है. What are the present constraint है using biomass? Lack of sustainable supply of biomass. Biomass production compete with the yes it can be. Bioenergy may not always a carbon like. तो आपका दो तो यार बिल्कुल सही सा लग रहा है. ठीक है तो तीनों भी सही है यहाँ पे. Lack of supply of biomass. Use of the following can lead food security problems. Using agriculture and forest IGP to stock organization में using biomass promoting ये तो आपका बिल्कुल सही है. And यहाँ पे लिखा है 2 and 3 using biomass carbon capture and storage. In the context of using biomass, which of the following is our characteristics कौन-कौन से हैं? Biomass as a fuel for power generation would meet all नहीं 1/4 हम बोल सकते हैं. अगर फर्स्ट को हम डिलीट करते हैं तो 1 by का एक चला गया.
एंड बायोमास एज ए फ्यूल पावर जनरेशन डज नॉट नेसेसरली डिसरप्ट, ठीक है, बायोमास एज ए फ्यूल फॉर पावर जनरेशन कुड हेल्प कर सकता है नेगेटिव एमिशन अचीवमेंट। यस, ऑप्शन सी। 164 का करेक्ट आंसर इज सी। 165 विद रेफरेंस टू द पैसेज फॉलोइंग assumption कौन कौन सी मिल सकती है? सम क्लाइमेट एनर्जी मॉडल सजेस्ट दैट use of biomass as a fuel power generation help in mitigating greenhouse emission. It is not possible to use biomass as a fuel for power without destruction of a forest and in सबके। तो ये थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। Today's last passage, that is, we are witnessing a dangerous dwindling of the diversity in our food supply. Green revolution is a mixed balancing thing. Over time, farmers have come to rely heavily on broadly adapted high-yielding crops के ऊपर to the exclusion of variety adapted to the local condition. Monocropping, vast field, some genetically uniform seed help boost yield कर सकते हैं immediate hunger needs के लिए। Yet high yield varieties also genetically weak है, require expensive आपको chemical fertilizer क्या हो सकता है, toxic pesticide क्या हो सकता है। In our focus on increasing the amount of food we produce today, we have accidentally put ourselves at risk of food shortage future के लिए हम तैयार कर रहे हैं, बस ये बताना है। तो कौन सा लॉजिकल एंड क्रिटिकल इन्फ्लुएंस? इन आवर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वी हैव बिकम हेवीली डिपेंडेंट एंड एक्सटेंसिव इसके ऊपर एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन देखते हैं। मोनोक्रॉपिंग वास्ट हाई यील्ड वेराइटीज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन, ये तो वैसे सही है बट इसके अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे? मोनोक्रॉपिंग विद हाई यील्डिंग वेराइटीज ओनली ए वे है, देखते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन कैन पोज ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी फूड सप्लाई एंड फूड सिक्योरिटी इन द लॉन्ग रन। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। बिकॉज ग्रीन रिवोल्यूशन हैज डिसएडवांटेज जेनेटिक आपकी डाइवर्सिटी वीक और स्पीच मॉडिफाइड वैरायटीज। दैट्स इट, कल हम डिस्कस करते हैं 2017 की पैसेज। दैट्स इट, थैंक यू।